Even before he was picked up in a police swoop down on the day he was to begin his fast, Anna has been maintaining simply that it was the massive public support, your support, he received that gave him energy. And as he speaks and as he continues his fast, which is in its last few hours, in spite of the twists and turns today, Anna has been simply and only smiling. A simple reminder of how he's won over the masses with this incredible movement that he's led. The first thing we heard from Ram Leela this morning was from the medical team. उनका वजन कम होने से उनकी एनर्जी काफी घट गई है। दूसरा, ब्लड प्रेशर रुख दिखा रहा है थोड़ा नीचे आने का, तो हमने उन पे जो निगरानी डबल कर दी है। और मैं तो ये तय किया है कि जन लोकपाल बिल जब तक नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। ये लोग आज क्या सुझाव लेते लेने दो, परवाह नहीं, क्या सुझाव लेते लेने दो, लेकिन इनको एक दिन जन लोकपाल बिल लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। As the parliament began its historic debate on the Lokpal draft, Anna kept moving from backstage to onstage, meeting all those who came to meet him. And all those who came to extend support. तो मेरी आप सबके सामने उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आज वो अनशन समाप्त करें, क्योंकि हम सब समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है जहां पर पार्लियामेंट इस पर डिबेट करेगी, और हम चाहते भी हैं कि पार्लियामेंट डिबेट करे। आखिर पार्लियामेंट के लोगों को हमने ही चुना है। But it was clear that he knew of all the developments and was letting his opinion be known. प्रार्थना करो, क्योंकि हमने जब टीवी सुना तो कोई इसका विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन अभी जो हमारी टीम अन्ना गई है उसको जिस तरीके का प्रस्ताव चाहिए वो अभी उनके हाथ में नहीं आया है। And as he sat watching the thousands supporting him, it was clear that despite his word prevailing over parliament, he would stick to his own regimen. हो सकता है कि वो मान जाएं कि हॉस्पिटल में जाके उनको जो उनके लॉस हुआ है उनके वेट का, उनके इंटरनल मसल्स वगैरह का, उसको रिकूपरेट करना चाहिए। It was remarkable to see how the body language of Anna Hazare changed through the course of the day, from appearing weary and worn out in the morning to a position where he had remarkable amount of energy upon hearing that victory is his.